Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9. Today we are going to cover yet another SLO from our unit number 3, and now we are going to examine different story elements or elements of story. So I hope you're doing well, students. Is every one of you active? Just raise your hands, please. Yes, Zoom class students, are you actively listening and participating in the lecture? This is very important in order to understand any fictional narrative, any story. It could be from a short story to any longer narrative. So we have been, okay, very good. Yes, Sadia, Muhammad bin Nadeem, Asif Javed, please raise your hands and do participate in the lecture. And if you have any kind of question, you can put forward. All right. So in this series of lectures, for the past two lectures, we have been studying all about fiction. Like in the last lecture, we studied about point of views. We saw that there are different point of views: first person point of view, second, third, omniscient, limited, and objective. Today we are going to talk about different ingredients and elements या components, आप इसे कह सकते हैं. They all come together to make a story. In every story, in every good story, you can find these elements. And if you want to create your own story, if you want to write, then you have to follow all these elements. So our SLO is examine the particular elements of story or drama. It means that even the drama, which is also like a story, but it is performed on the stage live. Yes, drama is made to be performed using different actors, a stage, there's a live audience in front of you, or it can be recorded और उसे आप बाद में देखते हैं. बट सेम थिंग, उसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो स्टोरी में एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं. तो examine the particular elements of a story or drama. For example, how the setting shapes the characters or plot. So setting is one of our elements, but it is very important because setting influence करती है कैरेक्टर और प्लॉट को. और कैरेक्टर और प्लॉट और कैरेक्टर्स क्या हैं? वो भी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी हैं. So it means that the setting can influence or impact our plot and characters. Let's have a very quick overview of all these elements. Now, each of these elements are very important. Now, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको you can find कि कौन सा स्टोरी एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सारे ही स्टोरी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कैरेक्टर है या प्लॉट है या थीम है स्टोरी की जिसमें मेन आइडिया होता है, या कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम स्टोरी में, या कैरेक्टर्स उसका setting, everything is very much important. So for that reason, what are the key parts of a story that make it interesting? Yes, you have read so many stories. बताएं स्टोरी को क्या चीज इंटरेस्टिंग बनाती है स्टूडेंट्स? कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ओके, फॉर यू इट इज कैरेक्टर्स. व्हाट एल्स? प्लॉट बहुत अच्छा होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, एंड प्लॉट हैज ऑल द sequence of events. All the events are sequenced in a plot. Yes? उसमें बहुत से ट्विस्ट होने चाहिए. Sorry, can you repeat it? उसमें स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट होने चाहिए ताकि Okay, उसको और it means, इंटरेस्टिंग बनाया जा yes, सके. twist, plot twist, वो भी प्लॉट का हिस्सा है. प्लॉट ट्विस्ट जिसे हम कहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द प्लॉट. कि प्लॉट में एकदम फ्लिप आता है और आप हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया. इट्स अ ट्विस्ट, इट्स अ फ्लिप. So that's a very good answer, that the plot makes the story interesting. The different elements of plots, the plot twist या climax या ending अगर अच्छी ना हो तो we would say that story का मजा नहीं आया. It's not a very good story. I don't like the resolution or how the story was ended. So there are so many key elements that make a story interesting. Now think about characters. Yes, there are protagonists, there is an antagonist, there are side characters,
additional characters. Some of them are good, some of them are with the bad forces, some of them are with good forces, and there are also some comical characters जिनका काम कॉमेडी पैदा करना है स्टोरी में. There are some foolish characters, there are really smart characters, some characters are evil, some characters are so empathetic, they are so good. And characters क्या हो सकते हैं? वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, personified into human beings. उनको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देंगे तो वो भी कैरेक्टर्स बन जाएंगे. All the people that you see, they are also characters, human beings. All right. Setting, plot, and conflict. These are very much important. And which one do you think is the most important? Yes? जी students. Characters भी बहुत important हैं. Setting बहुत ज़्यादा important है. And theme भी बहुत ज़्यादा influence करता है. So every element. What? Yes. वो drama में. Acting is in the part of the drama. Okay. Now, after this quick brainstorming sessions, today let's go through all these story elements. क्या होते हैं elements story में? The elements of a story are the fundamental components, हिस्से, parts of a story that work together to create a narrative. So it means that all these elements are connected with one another. So they are connected heavily, and that's what make a story. All right. Now let's talk about the first element that we have. Characters. और dialogues किनके होते हैं? Characters के dialogues होते हैं. Dialogues should also be really interesting. So what is a character? Characters can be protagonists, main characters, antagonists, which means opposing forces. और लड़ाई किनकी होती है? Protagonist की और antagonist की. Supporting character. And there are supporting characters. Either they are supporting the evil forces or they are supporting the good forces, the protagonists. Now, there can be one main character or many, and they may have a backstory that has shaped and molded them. Now, main character. Mostly हमारा main character कौन होता है स्टोरी में? प्रोटैगनिस्ट, हमारा हीरो. और हमारा मेन कैरेक्टर, एक भी मेन कैरेक्टर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं. ठीक है, दो से ज्यादा भी मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं. उनके इर्द गिर्द स्टोरी रिवॉल्व करती है सारी. नाउ, और हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है. कैरेक्टर का नाम क्या है, वो कहां से आया, व्हाट्स द एज ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट्स द लिविंग कंडीशन, हाउ द कैरेक्टर लुक्स लाइक, एंड उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, इंस्पिरेशंस, वो क्या करना चाहता है, उसके क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहां से आया है. एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कैरेक्टर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कैरेक्टर डेवलपमेंट. बिकॉज राइटर जब बैकग्राउंड देता है कैरेक्टर्स को, दिस इज व्हाट वी कॉल, और सारे वो एट्रीब्यूट्स देता है, दिस इज व्हाट वी कॉल कैरेक्टर डेवलपमेंट. So every character in a story, in a good story, is developed really well. ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर fully developed है और दूसरा सिर्फ just a normal shallow character और hollow. ऐसा बिल्कुल नहीं है. So every character should be worked on. चाहे वो छोटा कैरेक्टर है, चाहे उसका रोल स्टोरी में है या नहीं, वो स्टोरी का अहम हिस्सा होता है. So all the characters are important. Second point is characters may also play a role, though not always. Like there's a police officer, there's a firefighter, there's a doctor. All right. For example, a young detective working for Scotland Yard. What is our character, students? It is young detective, and he is young. अब ये इसकी development है. He works for Scotland Yard. He works with a police force. यहां पे बात हो रही है Sherlock Holmes की, which is a very famous detective character. So next, see, you can find so many different characters of different races, backgrounds,
of all, different heights, different kinds of personalities, different kinds of character values, moral values. तो बहुत सारे characters आप here see, this is an animal, but if it is personified as a human being, कि उसने कहा the dog said in a children's story mostly या adult stories में, like Animal Farm is a very famous novel, all the characters mostly they are animals in a farm. There's a horse, there's a cat, there's a dog, and so much more, and they are talking to each other. This is very unusual, but now the writer made it into a character, so we can say that non-human जो हैं वो भी characters होते हैं इसमें. ओके, प्लॉट की हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी. हाउ प्लॉट इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस. ऑल राइट, द प्लॉट, व्हाट डज इट हैव? इट कंसिस्ट ऑफ द इवेंट्स, स्टोरी के इवेंट्स. पहले ये हुआ, फिर ये, ऑल दोज इवेंट्स आर इन द प्लॉट that happen in the story. In a plot, you typically find an introduction, rising action, climax, falling action, resolution. ये उसने, ये हमने यहां पे elements भी आपको, stages भी बता दिए plot के. Now, for example, अब हमारा character कौन था? He was a young detective from, and he's working for Scotland Yard. Yes. The young detective has been assigned his first case, the murder of an affluent woman. A woman got murdered, and this young detective, who's very energetic, he's young, very sharp, इसको ये केस मिल जाता है. अब एक प्लॉट बन गया. Will he able to solve the murder case or not? This is our plot. क्या होगा इसमें? Starting, सारा कुछ इसमें आएगा. So this statement tells us कि प्लॉट, आपको प्लॉट का अंदाजा हो रहा है इस स्टेटमेंट से कि स्टोरी किस बारे में होगी? इस केस के बारे में, of an affluent woman. So these kind of plot lines you can find in Arthur Conan Doyle's novels like Sherlock Holmes, The Adventures of Sherlock Holmes, or Agatha Christie, where there are mysteries, adventures, crime thrillers, detective. You think like a detective. जब आप ऐसे novels पढ़ते हैं, you start to think like a detective, and the story gets really interesting because you are looking for the clue. ये किसने किया है? Everybody is lying. Somebody must be caught. There's a mole in the story. There's a person who's manipulating everybody, and we have to find them out कि ये किसने किया है. So it gets really interesting when it comes to these kind of plot lines. So ये एक plot line है हमारे पास. All right, conflict. Yet it's a very important story element. Conflict. अगर conflict नहीं है story में, then what's the point of a story if there is no conflict? There should be a problem जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि अब ये मसला हल कैसे होगा? How will the conflict resolve? Conflict means problem. Every story must have a conflict. For example, it could be a challenge given to a person, और हम देखते हैं कि will he able or she able to complete this challenge, or it could be a problem around which the plot is based. Without conflict, the story will have no purpose or no trajectory. There will be no direction कि story कहाँ जा रही है. There is no problem. तो हम story को पढ़े क्यों if there is no problem? Okay. अब यहां पे एक एग्जाम्पल मैंने डाली है, To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Now, the story is set in the racially segregated American South during the 1930s. क्या पता चला हमें यहां से? क्या प्रॉब्लम है? रेसिज्म, किसी को उसके रंग की वजह से जज करना. Now, in this story, what happened is a black person, an African, was charged with a crime unnecessarily. He has nothing to do with it, but he was charged just because he was having dark or black skin. Now, this is a very big problem. क्या वो इस केस से निकल पाएगा? Who will help him? This is a problem, right? So this is an example of a conflict. Now, वैसे अगर आप इस लाइन को देखें, सेटिंग भी आपको पता चल रही है. It is set in the 1930s, and
the story is in America, South, okay, South side of America. So इसी से आपको सेटिंग का भी पता चला है, जो कि हम अभी आगे बात करते हैं. अब तक जितने एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, आप सबको क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हैं. Yes, I hope that these elements are really actually very easy to understand, because all of you must have seen a film or a movie at some point of time, or you are very fond of reading stories, then this will come very easy. Now, setting. Setting पे बात करते हैं. What is setting? What does setting include? क्या आता है आपके ज़हन में जब आप ये लफ्ज सुनते हैं setting of a story? जी. Location, that's a very good answer. Gee, Zoom class students, what do you think when you come across this word setting in a story? Yes, very good answer. where The time, place, कैसा environment था, किस तरह की सोसाइटी है, क्या हो रहा है वहां पे, तो all of these things, weather कैसा है, किस किस जगह पे स्टोरी है, दुनिया के किस हिस्से में है स्टोरी, तो हम इमेजिन करते हैं कि अच्छा ये सेटिंग है. तो हम कैरेक्टर्स भी देखेंगे. अगर मैं एक सेटिंग आपको देता हूं, इन 2045 किस तरह के कैरेक्टर्स होंगे? इफ अ स्टोरी, पुराने कैरेक्टर्स होंगे 2045 में. 2045 नए characters, well up to dated, technologically advanced characters. They are having gadgets, electronics, or they are modern educated people in 2045. क्योंकि technology, industrial, you know, क्या पता कोई revolution आ जाए, so they will be very advanced. But if I give you a setting of a story set in 1600s, it could be an adventure. That's a very good answer. कोई journey हो सकती है. अभी facilities नहीं थी, क्या पता, there is no camera, there is no television, there is no electronical devices, so it would be like very basic and simple. तो characters भी simple होंगे, उन्होंने पैंट शर्ट्स भी इस तरह की क्लोथिंग भी नहीं की होगी जो हम करते हैं. तो सेटिंग की वजह से आपको कैरेक्टर्स का अंदाजा हो रहा है, राइट? दिस इज हाउ सेटिंग इन्फ्लुएंस योर कैरेक्टर्स. सो सेटिंग में क्या है, जब आप किसी स्टोरी की सेटिंग पे बात करेंगे, फिजिकल लोकेशन क्या है, बट ऑल्सो द टाइम. टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम में वो साल, वो मंथ, वो दिन, उस दिन का टाइम, सुबह, दोपहर, शाम या मिडनाइट, कुछ भी हो सकता है. अर्ली मॉर्निंग, डॉन, डस्ट, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइम्स. पास्ट, स्टोरी कैन बी सेट इन द पास्ट, in the present, and it could also be set in the future. So, and the social and cultural conditions, कैसी सोसाइटी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है या पुरानी प्रिमिटिव सोसाइटी है? हाउ आर देयर कल्चरल वैल्यूज? आर दे वेरी ओपन माइंडेड, वेरी लिबरल? आर दे कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल? क्या सेटिंग है? व्हाट इज द कल्चरल कंडीशन? सेटिंग इंक्लूड्स प्लेस, वो जगह, वो लोकेशन, फिजिकल लोकेशन, टाइम, and weather also. Weather conditions. Is my story set in it could be in let's say a country which has always cold weather, where there is snow falling all the time. So this can also be part of our setting. Now, theme. What do you understand by the word theme? Yes, students. थीम क्या हो सकती है स्टोरी में? बैकग्राउंड भी हो सकता है. कोई मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? जैसे हमने देखा टू किल अ मॉकिंगबर्ड में क्या थीम थी? रेसिज्म थीम थी. ठीक है. और अगर हम देखें कोई स्टोरी है द लायन किंग, उसमें क्या थीम है जी? द लायन किंग एनिमेटेड फिल्म भी है, इट्स अ स्टोरी. तो उसमें क्या थीम है? जंगल थीम. Yeah, it is a setting. Jungle is the setting. The characters are animals.
but they are personified into human beings because they are talking to each other like Yes. humans do. तो उसमें थीम है रिवेंज की, है ना? हाँ, वो उसमें विलन होता है, वो सिम्बा के फादर को मार देता है एंड ऑल, सो इट्स लाइक अब मैं किंग बनूंगा, राइट? तो ये उसकी थीम है, टू अपनी पोजीशन दोबारा हासिल करना, ये उसकी थीम है. नाउ थीम कुड बी एनी आइडिया, कोई बिलीव, एनी मॉरल लेसन और इनसाइट. इट्स द सेंट्रल आर्गुमेंट दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड. कोई भी थीम हो सकती है. थीम हो सकती है रिलेटेड टू योर फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, योर इट कुड बी फ्रॉम किसी दूर का सफर है, कोई जर्नी है, एडवेंचर इज अ थीम, और रिवेंज, कैरेक्टर बदला ले रहा है. तो इस तरह की बहुत सारी थीम्स हो सकती हैं. तो कैसे पता चलेगा स्टोरी की थीम क्या है? स्टोरी के स्टार्ट से पता चलेगा आपको, उसके टाइटल से भी अंदाजा हो जाएगा, जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो थीम क्लियर हो जाएगा. ऑल राइट, नाउ हमने ये देखना है कि सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर सेटिंग चेंज हो जाएगी तो क्या कैरेक्टर्स पर इफेक्ट पड़ेगा? जी, डेफिनेटली कैरेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा. देखें यहां पे दिन का टाइम है, इस तरह की कोई जगह है, डेजर्ट है ये, ठीक है? द सन इज ऑन द पीक. Here, look at this social situation. They are very poor, right? They look really poor. They have a newborn child over here and they are like asking for help. देखें इनके कपड़े देखें, पैचेस लगे हुए हैं, old worn clothes. This is not 2045. This could be a story from the past. तो सेटिंग से पता चल गया. लेकिन अगर सेटिंग है मार्स की, सेटिंग इस दुनिया से अलग भी हो सकती है. जी स्टूडेंट्स, कोई सेटिंग बताएं जो, जैसे इट कुड बी अ स्टोरी सेट ऑन द मून, ऑन मार्स, ऑन एनी अदर प्लैनेट इन द गैलेक्सी. तो देयर आर लॉट ऑफ मूवीज एंड स्टोरीज ऑन दैट. सो जब ऐसी कोई सेटिंग होगी तो क्या होगा? कैरेक्टर्स भी उसी तरह के होंगे. अगर मार्स पर एक ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियसली उसने इस तरह के कपड़े पहने होंगे, वो गैजेट पहना होगा, पूरा ऑक्सीजन टैंक होगा, और वो कैरेक्टर भी एडवांस होगा बहुत ज्यादा. वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, वो एक एस्ट्रोनॉट हो सकता है. तो सेटिंग चेंज होगी तो कैरेक्टर्स पर असर पड़ेगा. So it's very simple to understand. Look at this picture and try to read it. All right. So हमने सीखा the setting often influences or impacts the characters' backgrounds, beliefs, and personalities. Depends upon the setting of the story. For example, a character from a rural area might have different values and experiences than one from a bustling city. If a character is from a village, a rural area, the problems are really different there, है ना? The problems are different, the characters are also different. उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो challenges हैं, जो उनकी personality है, that is different. It means character development change हो गई setting change करने से. But इन्हीं characters को अगर हम 3050 में ले जाएं या आज के प्रेजेंट में ले आए तो दे विल बी, और सिटी में ले आए, इन द मिडल ऑफ द सिटी, तो दे विल ड्रेस डिफरेंटली, दे विल थिंक डिफरेंटली, दे विल टॉक डिफरेंटली. ओके, सो इट मींस दैट सेटिंग चेंज करेंगे तो कैरेक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होगा, असर पड़ेगा सेटिंग कैरेक्टर्स पर. और क्या सिर्फ कैरेक्टर्स पर असर पड़ेगा, प्लॉट पर भी. हम उसे देखते हैं, पहले ये एग्जांपल देखें आप. Characters within a story set in ancient Egypt will abide by much different cultural norms than characters in a story that takes place in modern day. एक कुछ कैरेक्टर्स हैं वो एंशियंट इजिप्ट में है, पुराना कदीम मिस्र. They are different. Their problems are also different. But there's a character set in United States of 2024 that would be really different. Setting change की, characters will be changed. All right. So in the setting, the place can be real. This is a real world, but it can also be imaginary. See, this is on another planet. They are dressed like that. They are dressed like astronauts, and there's this
technologically advanced space jet or spaceship. So it means that ये भी हमारी setting हो सकती है. Now, अब ये story है Little Red Riding Hood. You must have read this in your childhood as a kid. It's a very interesting story. It's about a young girl who goes to visit her grandmother and is warned by her mother to stay on the path. लेकिन वो क्या करती है? Along the way, she meets a wolf who deceives her and ends up eating her grandmother, and disguising himself as her Little Red Riding Hood is saved by a huntsman who comes to the rescue. So this is the whole story. But what if we change the setting? What will happen? Let's see. The setting now is on a space station up in the sky, up, not on this earth. अब क्या होगा? अब स्टोरी इस तरह स्टार्ट होगी. In a futuristic space station orbiting Earth. अब ये space station Earth के गिर्द orbit कर रहा है. अब clothes भी change हैं. The character is totally changed. Little Red Riding Hood is a young astronaut. पहले वो क्या थी? She was just a little girl. Now she's a astronaut, क्योंकि astronauts ही तो space में जाते हैं. आम बंदा तो नहीं जाता. So why is she here? She's here because she's an astronaut and she's on a routine checkup of her grandmother's model. वही story, but अब उसके characteristics change हो गए, character development भी change हो गई. Story वही है, लेकिन उसकी setting change की हमने. Now, okay, this is a simulation link. This will tell you more about elements of a story and how everything works out together and how you can create a very good, interesting story that people will like actually. And it also makes sense. Now, here is your worksheet. क्या करना है आपने? ये पैसेज पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि टाइम और प्लेस दोनों क्या है? सेटिंग. सेटिंग आइडेंटिफाई करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, setting identify करेंगे. This is what you're supposed to do, and you have to submit it by the next lesson. Okay, you have a worksheet, you also have a question bank and this presentation. All right, thank you so much. This was all about today's lecture. Now if we have a minute, we can quickly look at the question bank that we have about all these different elements, ताकि वो सारा जो आपने knowledge gain किया है, you can put it into practice. So the knowledge is pretty much tested. So कितने elements देखे हमने story के? 5. Theme, character, plot, setting और theme, character, plot, setting and conflict. Okay. जी स्टूडेंट सबको क्लियर है? अली, सादिया, किसी का कोई सवाल है अभी तक? जी पूछें. जी अली क्लियर है. जी क्लियर है, सब कुछ okay, क्लियर है. that's very good. Okay, just take a look at this question bank, students. क्या कहते हैं हम उस जगह, उस चीज को where and when a story takes place? Is it plot, setting, conflict or characters? The story is taking place, it is called setting. Next, in a story where a character faces a big problem with their best friend, what is the problem called? क्या कहेंगे? Conflict कहेंगे. What do we call the people or animal who are in the story? Good. जी Zoom class students answer करें please. If a story is about a hero going on an adventure, what is this sequence of events? What is this? If a story is about a hero going on an adventure, it's a plot. और अगर मैं कहूं कि आप बताएं थीम क्या है? एडवेंचर. ठीक है, एडवेंचरस थीम होगी. Which part of the story tells us the main message or the main lesson? क्या चीज है स्टोरी की जो हमें बताती है ये मेन मैसेज है? थीम. Very good. In a story where the main character lives in a big city, what is the big city part of? Big city को हम क्या कहेंगे? Character, plot, setting या conflict? Big city, yeah, setting. So now what do we call the events that lead up to the big moment in the story? जी
यस, इस वजह से स्टोरी आगे बढ़ेगी, प्रॉब्लम की वजह से. If a character has to choose between two different jobs, what kind of problem is this? Is it a plot, setting, or theme? Or conflict? It's a conflict. It's a conflict. Because दो jobs में से एक choose करना is a problem, and problem is our conflict. What do we call the ending of a story where everything is resolved? Resolution. Yeah, that's very good. If a story takes place in a magical forest, what part of the story is the magical forest? It is the setting, yes. So that's all about today. We have solved this question bank to check your understanding, and you have given really good answers. Thank you so much, my dear learners. अब किसी का कोई question या comment है तो please before we end the lesson. Gee, I hope everything is clear. Next time we will have another SLO. Now we talked about elements of story, characters, the different stages of plot, story elements भी हमने देखे, और स्पेसिफिकली हमने देखा कि सेटिंग कैसे कैरेक्टर्स को और दूसरे एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.